Hello and welcome to another session of operating system. In today's session we'll discuss about domain server, DNS server, concept of domain, and we'll create an Microsoft Active Directory. So let's start with DNS server. What actually is DNS server? DNS server क्या है, क्या काम करता है, सबसे पहले ये समझते हैं. देखिए, DNS सर्वर बेसिकली एक ऐसा सर्वर है जो कि आपके नेटवर्क के अंदर किसी भी नाम को रिकॉग्नाइज करके वो उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर पाता है. अगर आपको सपोज़ कोई भी वेबसाइट है उसका आईपी एड्रेस याद रखने को कहा जाए, सपोज आई से दैट रिमेंबर द नेम ऑफ google.com, sorry, remember the IP address of google.com. For example, it is something like 74.125.136 and you have to remember this number. आप कितनी साइटों को याद कर पाएंगे? 10, 15, 20, 25, दैट्स इट. उसमें भी कितनी बार कोरिलेट करके याद कर पाएंगे कि ये वाला इसी साइट का था. इसके बाद भी अगर उसमें फ्रीक्वेंट चेंज होते हैं, आईपी एड्रेस आपका फिक्स नहीं रहता, तो उसको कितनी जल्दी आप मेमोरी से फिर चेंज कर पाएंगे कि नहीं गूगल का आईपी एड्रेस कल ये था, आज ये हो गया है. सो व्हाट वी डू इज वी एम्प्लॉय अनदर सर्वर फॉर दिस, जिसका काम बस ये होता है कि किसी भी नाम को ये किसी आईपी एड्रेस के साथ जोड़ देता है. ठीक है. Suppose I want to check that what actually is the IP address of some specific server. So go to command prompt, and here there is a command ns lookup. When you just type this command, it will connect you with your default server. For example, इस कंप्यूटर में जो डिफ़ॉल्ट सर्वर है उसका नाम है pcti.pcti.ru.com. okay, and the IP address of that server is 10.0.4.1. so it has got connected to that server. Now if you query about any particular service, किसी भी साइट के बारे में अगर आप इस सर्वर से क्वेरी करेंगे तो आपको उसके IP एड्रेसेस मिल जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई जस्ट टाइप हियर google.com, and here you can see different IP addresses of google.com: 74.125.236.5, 6, 9, 14, 0, and so on. This one I was talking about. क्वेश्चन उठता है कि ये IP addresses क्यों चाहिए? Why we are looking for this IP addresses? The basic idea is that किसी भी कंप्यूटर से आप नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसका एक ही रास्ता होता है आईपी एड्रेस. ठीक है. इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको गूगल खोलना है तो यू कैन डायरेक्टली ओपन दिस आईपी एड्रेस, एनी ऑफ दीज आईपी एड्रेसेस. ओके, आप डायरेक्टली इनमें से कोई भी आईपी एड्रेस को, हियर यू सी I have written the IP address and you can see the website. ठीक है. ये IP address मुझे कहाँ से मिला? This DNS server has given me this IP address. Okay. Now, what actually is DNS server for? It is just to basically convert your names to IP address and IP address to name. There are different types of zone in this DNS server. So this record is called access record, and it is there in forward zone. In the same way, suppose I want to I just type here IP address like 174.125.236.5 for example, and you can see here it has given some name. This is called reverse zone record. ठीक है. कोई ज़रूरी नहीं है कि फॉरवर्ड जोन में जो एंट्री हो वही आपकी रिवर्स जोन के अंदर भी रखी जाए. ठीक है. समटाइम्स इट इज़ सेम, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज़ डिफरेंट. ठीक है.
Now the question arises, how can we create these domain server? What are the different ways to create this DNS server, and what actually is domain? Now if we talk about domain is a specific name for some group of computers. For example, आपने उतने सारे आईपी एड्रेसेस देखे, वो सारे एक ही कंप्यूटर पे नहीं दिए गए होंगे, ठीक है. ऑल दीज आर डिफरेंट कंप्यूटर्स लोकेटेड एट डिफरेंट एरियाज, एंड if you use google.com as a name, whichever is closer to you, or which one is basically most free, जो भी सिस्टम इसमें सबसे ज़्यादा खाली होगा और आपके सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा, आपको सबसे फास्ट रिस्पॉन्स करता होगा, उस सर्वर से आप डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे. वेल, so we have to create a domain server, and for this in Microsoft systems we require any server operating system, and there you have to select manage your server, and in that you have to basically install some services that we are going to do.